supposed to make our students leadership ready so that we realize how important it is to bring out more successful people in the team. When we talk about leadership abilities, please be careful how much we can handhold together to bring most of the people come down to more levels of success. I graduated twice, mastered twice, and from that day onwards till date, each and every moment I talk, I get myself identified. I get myself resourced. 7 days in a week, 5 days, either I'm in the electronic media or in the print media. ये देख के मेरे relatives आज भी कहते हैं हमें बचपन से पता था अंजन बहुत बड़ा होगा. So it's all like that you have to handhold your child from the class right from the beginning. कभी कभार काम के वजह से, system के वजह से, principles के वजह से, कई सारे reasons के वजह से we become irritated. And that's the way how we start taking things as granted in the classroom. कोई मॉन मुंह की मॉय सिलेबस देख रहा है घुसी जाओ. ये आना जायज बात है, ये होता ही है. It is obvious. But then again, remember, they should not be wasting those 45 minutes and 50 minutes in your classroom just looking at you, pretending to listen to you. Otherwise, your lectures goes in vain. Your education and your academics also goes in vain. There has to be a logic behind it, reason behind it. जिसके वजह से ideally I start classes with a different topic. Today I'm going to start for the first time in AjmalFoundation classes on a different level from where we'll understand introspective elements of learning. Ladies and gentlemen, UGC has laid out graduate attributes. ये कुछ graduate attributes है जिसको जाने बगैर आप क्लास नहीं ले सकते. हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में जब बोला एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले ब्लूम्स यहाँ पे समझाएंगे, everybody started laughing. But I should tell you, Bloom's taxonomy का 7 levels, 6 levels, if I do not implement in my classes, graduate attributes, if I do not implement in my classes, I will not be able to form the instructional design of the lesson plan. आपने lesson plan बनाया है एक टॉपिक, आप कितना लेक्चर्स में खत्म करेंगे? 3 लेक्चर्स में या 4 लेक्चर? That's it. लेकिन ये 4 दिन का 4 लेक्चर का इंस्ट्रक्शनल डिजाइन भी आज नैप्स मांगेंगे. How would you be able to take the class? जैसे अगर कोई सरकार फ्लोट करता है कोई फंड, तो once you have utilized the fund आपको यूसी देना पड़ता है ना, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट से कि मैंने आपको 1 घंटा टाइम दिया. What is the time limit of your classes? 50 minutes, 45 minutes or 1 hour? 1 hour. तो 60 minutes में आप क्लास को लिया कैसे? How did you take? तो इसका अंदर में भी कई सारे चीज आएंगे, छोटा bifurcations आएंगे, and that is why they have started asking you the ways of how you implement your classroom techniques. You said you'll finish the topic within 60 minutes time. Now खेलने के लिए उतरा 45 minutes time. देखिए हमारा टाइम कैसे कम हुआ है. This is what they are going to ask you. You understand? अच्छा. Make sense then what do you do? Do you start the class? Thermodynamics आज का topic. Understanding of the previous topic. That is called the recap process. है ना? तो Mihir sir, who does the recap? You or the students? No, I'm talking of recap. I'm not asking of assessment. When you talk of questions, there is assessment. I'm talking of recap. Recap में the questions नहीं आता. इसका मतलब है recap करने का तरीका हमें नहीं पता. हमें लगता है if I ask questions, recap आ जाता है. चलो, I ask a question to Sabreen right now, and not because of my lecture, but because of her own sourced, information, she would be able to give me the answer. इससे मुझे कैसे पता चलेगा मैंने lecture से सुना था या आया था यार, है ना? अच्छा. Recap ideally has to be done by the teacher or by the student? By the teacher. Recap has to be done by the teacher or by the student? By the teacher. Why? Recap is done on the topic which has already been covered. Anything which has already been covered, assessment के लिए तो student से recap करवाना चाहिए था ना सर? Common sense. Graduate attributes में यही सब चीज आया. Open up right now. So the topic that you have already covered has been understood or not? इसी के लिए तो recap किया जाता है. तो think about it. Recap should be done by whom? अभी आपने कहा सर by the students, by the teachers. Why did you say that sir? Because हमें नहीं पता स्टूडेंट्स का फटाफट रिकैप कैसे करवाया जाता है. हमें लगता है स्टूडेंट्स को रिकैप करने देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा. तो लेट मी फिनिश इट ऑफ. इसके लिए आई स्पीड अप माय क्लास. दैट इज द रीजन आई एम डूइंग द रिकैप. आइडियली रिकैप हैज टू बी डन बाय द स्टूडेंट्स. चलो रिकैप टीचर्स करे, स्टूडेंट करे. मेरे सर मोटा-मोटी कितना टाइम लगेगा रिकैप करवाने के लिए? ऐसे जस्ट टू एक्सप्लेन 10 मिनट्स. अभी कितना बचा? अच्छा Mihir sir, is it correct till the recap you have not yet started the law of thermodynamics आज का टॉपिक में? Right ना?
तो 35th मिनट में जब आपने आज क्लास शुरू किया है, आप खत्म भी करेंगे, रैप अप में भी जाएंगे, रैप अप में अगेन विल रिपीट बैक, उसका भी 5 मिनट छोड़ते हैं। तो आइडियली हमारा आपने कितना टाइम आया है क्लासरूम में थ्योरी इनपुट करने का? 30 मिनट्स। उसमें से डेकोरम इश्यूज भी है। व्हाट हैपेंड टू यू लुकिंग आउटसाइड द विंडो? मैम मे आई कम इन? व्हाई मोबाइल फोन स्विच्ड ऑन? ये सब भी है ना। इसका कितना टाइम पकड़ो? तो कितना में उतरे हम लोग अभी? 25 मिनट। तो आपने तो कहा था 60 मिनट्स का क्लास लेंगे आप, अभी तो बचा 25 मिनट्स। ऐसा करके ये लोग पकड़ना शुरू किया आजकल ना। 25 मिनट्स माइनस कितना गया हमारा? कितना? 35। ये 35 मल्टीप्लाइड बाय 3 लेक्चर्स, क्योंकि मीर सर ने कहा था 3 लेक्चर्स में हम लोग ये टॉपिक खत्म करेंगे। 35 मल्टीप्लाइड बाय 3 लेक्चर्स, जितना आवर्स होते हैं उसका कॉम्पेंसेशन कैसे करेंगे? और उसका कंपेंसेशन अगर हम लोग ब्लेंडेड मोड में करते भी है, जैसे मैंने सर को तब कहा था, इसको हम लोग रूटीन में घुसाएंगे कैसे? टू शो दैट योर ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन इनटू अ क्लासी वे ऑफ हैंडलिंग स्टूडेंट्स बिहेवियरल पैटर्न्स एंड लेसन प्लान्स। इसको हम लोग घुसाएंगे कैसे? हाउ विल वी डू? इसको कहते हैं क्वेश्चन क्लासेस। तो ये हर कोई चीज के साथ में एक एजेंडा ऐसा बनता है। कभी आपने ऐसा सोचा नहीं था कि आपको आप ही का मुंह से प्रमाण करके देंगे कि आपने 25 मिनट का क्लास नहीं लिया? दिस इज द वे हाउ इट हैपेंस। और उसके बाद में ये भी बोलेंगे कि जो 25 मिनट गया, ये 25 मिनट का कंपनसेशन कैसे करेंगे? हाउ वुड यू डू इट? तो वी डू नॉट हैव एन आंसर। When we talk about leadership abilities, please be careful how much we can handhold together to bring most of the people come down to more levels of success. Avoid fewer and higher percentages of failures. काम करेंगे, failures तो आएगा ही आएगा. Hand holding में the chances are failures would be lesser. That's the catch that we wanted to explain. So no penalties for everybody. We are supposed to make our students leadership ready so that we realize how important it is to bring out more successful people in the team. मैंने उत्तम सर के साथ में मजाक से बोला, ऐसे ही लोग रहते हैं, ऐसा all those things. I do not mean anything very personally. मजाक करके बोला, but the problem is this. कोई आदमी फंस जाता है तो दिखने में मजा आता है ना, अभी फंसेगा. So this is a lookout that we are supposed to change. अभी भी मैंने मैम को भी कहा था, सबरीन ने पता है ब्रेक में मैम के बारे में क्या बोला? सुनेंगे? मैम ने बोला हाँ, बताइए क्या क्या बोला था. So you flourish more and more negativity. You breed out more and more negativity, based on which a child's psychosocial element reaches out to levels where the child is never ever leadership ready. That is why we speak of generating the capacity and the competency of a child for mapping out tasks and authority delegations and setting directions and blah 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 whatnot. You must have attended many refresher courses, FDP programs. You will also, handle more or less, more and more FDP issues, where they'll train you how to teach. Nobody trains you how to learn. Have you observed that? How to teach, common subject, but how to learn? ये तो कभी नहीं सिखाते. So there is a component in graduate attribute that speaks about lifelong learning process in a particular child. Lifelong learning is very important. सुबह मैंने कहा था ना, इंग्लिश डिपार्टमेंट एंड माई सेल्फ रॉन्ग इंग्लिश. आज जो मैंने बोला शायद आपको इतना खराब नहीं लगा होगा, बिकॉज आई एम सीनियर टू यू बाय एक्सपीरियंस, बाय एज. करेक्शन पॉसिबल भी है. मैम इमेजिन अगर कल एक बच्चा ने आपको ये चीज बोल दिया तब आपको लग जाएगी. यू विल नॉट टेक इट. दैट इज व्हाई वी नीड टू कीप ऑन ओपनिंग डोर्स ऑफ लर्निंग मोर एंड मोर. डू नॉट क्लोज डोर्स ऑफ लर्निंग.